In October, in the first set of assembly elections after the Lok Sabha polls earlier this year, the BJP defied all predictions and emerged triumphant in Haryana. This was despite the Congress party running the BJP close in Haryana, winning 5 out of 10 seats in the Lok Sabha polls. Many believed that the Lok Sabha result would have had an impact on the assembly elections, but the result surprised many, with the BJP winning comfortably and forming a government in the state for the third successive time. Naib Singh Saini had replaced Manohar Lal as the Chief Minister in the build-up to the Lok Sabha elections, and the decision paid off as far as the assembly polls were concerned. He took oath once again as the Chief Minister. नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. On the other hand, the Congress party seemed a divided house, with lack of coordination between those loyal to Kumari Selja and Bhupinder Singh Hooda being blamed. हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा. हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है. गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है. गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है. गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है. हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है. मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं. भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है. मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं. जयराम रमेश का अपना काम है और वो शुरू से ही अपने काम में लगे हुए हैं. आपको जलेबी खिलाएंगे. मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा. हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है. ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही. सब कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन. कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए. तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे. अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता. And that wasn't all. The Congress and the Aam Aadmi Party, though part of the India Bloc nationally, fought separately in the Haryana Assembly polls. At the end of it all, both parties were also left blaming each other for the outcome. In Jammu and Kashmir, there was some good news for the India Bloc as a coalition, including the National Conference and the Congress Party, emerged victorious. The BJP virtually swept Jammu, but the National Conference was the dominant party in the valley. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. Omar Abdullah took oath as Chief Minister in the first assembly election held in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370. Attention will now turn to the promise of the restoration of statehood by the centre. पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी.
यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। ये जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को, भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है और यही प्राथमिकता होगी। But even in Jammu and Kashmir, it's not as if there hasn't been any discord within the India bloc. The Congress party, which had been offered a berth in the Omar Abdullah-led cabinet, chose not to be part of the government there, instead offering support from the outside. And what is evident is that the divisions within the India bloc are playing out publicly. Differences between alliance partners are the norm in a noisy democracy such as ours, but what's happening now is significant because it appears to represent a situation where the Congress party is not able to punch above its weight in alliance dynamics. The party won 99 seats in the Lok Sabha polls in 2024, far improved in its performances compared to 2014 and 2019. Many believe this would enable the Congress to lead the India bloc, so to speak. But the Haryana result has prompted many of its partners to reassess their relations with the Congress party. Even in Jammu and Kashmir, the strike rates of the National Conference and the Congress party tell a story. The National Conference won 42 out of 56 seats it contested, a strike rate of 75%. In contrast, the Congress party contested 39 seats but won only 6, which is a strike rate of 15%. Far from strengthening the alliance, the Congress's performance appeared to weaken it. So how reliable is the Congress party? In Uttar Pradesh for the upcoming Bypolls, it is the Samajwadi party that will be contesting on all 9 seats. Is this a sign of a somewhat diminished stature of the Congress party in Uttar Pradesh? हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगे। तो मैं आज यहाँ पर जाहिर रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके अनुमोदन अनुसार और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाज़त से इस चीज़ की घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, ये जो संदेश है, ये संदेश एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत के ओर इशारा करता है, जहां पर राजनीति से उठकर इस देश की एकता, अखंडता, सौहार्दता, संविधान और हमारे हर वर्ग के लोगों का सम्मान। वॉकओवर तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ताकत को एकजुट कर और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते हुए हमारी ताकत ना ही बटे, बल्कि सीट को जीतने के लिए जिस रणनीति की आवश्यकता है, उसके चलते हुए ये निर्णय सहायक साबित होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह का ट्वीट किया कि सिंबल जो रहेगा वो सपा का रहेगा, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि क्या कोई उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस पार्टी? बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। देखिए, कांग्रेस डर गई या बीजेपी डर गई, ये उनके इस वक्तव्य से ही महसूस होता है कि जब एकजुटता का प्रदर्शन हमने किया तो एकजुटता ताकत की निशानी होती है और ताकत के सामने लड़ने में जब कोई मजबूर या कमजोर महसूस करता है तो इस प्रकार का वक्तव्य करता है। कांग्रेस पार्टी की एपिक बेइज्जती, कंप्लीट सरेंडर अब पूरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है, पहले तो 7 सीटों पर ऐलान कर दिया था एक तरफा कि 9 में से 7 सीटें समाजवादी लड़ेगी।
कांग्रेस को स्नब किया। 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस ने, उनको एक प्रकार से उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्होंने ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर मान लिया, स्वीकार लिया। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वो अलायंस के अंदर टिकट देंगे तो वो हार की गारंटी होगी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के ट्रोल और कांग्रेस के समर्थित इकोसिस्टम तो राहुल गांधी को कोट अनकोट पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, पर उनके खुद के इंडिया अलायंस के नेता ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा वो सीट अगर राहुल गांधी को देंगे और कांग्रेस पार्टी को देंगे, उतना ज़्यादा नुकसान इंडिया अलायंस का होगा। In Kerala, Priyanka Gandhi Vadra filed a nomination as the candidate of the Congress party from the Wayanad constituency. It was the constituency that Rahul Gandhi vacated following his victory in 2024 in both Wayanad as well as Raebareli. He chose to retain the latter. Priyanka Gandhi will be making her electoral debut, but allies from the India Bloc nationally are not going to give her a free pass. The Communist Party of India has once again fielded a candidate in Wayanad as it had done against Rahul Gandhi in the Lok Sabha election. Back then it was Annie Raja. This time it is veteran party leader Satyam Mukherjee. The BJP had fielded K. Surendran, the party president in the state of Kerala, against Rahul Gandhi in the Lok Sabha polls. This time it has picked Navya Haridas, a 2-time councillor from Kozhikode. Lights! The all-new Jupiter is more than more. Style more. Storage too is even more. Oh, the all-new Jupiter is more than more. पेश है ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर, इंडिया का नया ज्यादा हुआ अधिकम बेशी शास्ता अधिका वधु बेसिक। आलू गोभी करची हिलाना पड़ेगा, नहीं तो जलेगा। नहीं जलेगा। नहीं जलेगा? सास मेटल है, इवन हीटिंग, नो बर्निंग। नहीं जलेगा। अब जला। 3 लेयर में सास मेटल, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, मतलब इवन हीटिंग, नो बर्निंग। विनोद कुकवेयर, इंटेलिजेंट कुकवेयर। Heart on fire, I desire thunder riding. The Harley Davidson X440. Find your freedom. A sport like no other, a thrill like no other. Watch the biggest pickleball tournament of this season, India Masters. 24th to 27th October, live from RK Khanna Stadium, New Delhi. For information and live streaming, log on to pickleballnow.in. The rhetoric against the Congress has been strong on the part of its political opponents, principally the Bharatiya Janata Party, and what is the start of yet another election season. The side of Mallikarjun Kharge, the Congress party president, who is also a Dalit, waiting his turn to enter the office where Priyanka Gandhi was filing a nomination, was latched onto by the BJP, which said that this was a case of the Gandhi family insulting members of the scheduled castes. The Congress denied this. 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ। उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। Whatever happened between them,
लेकिन एक शेर तो बनता है, बड़े आबरू बेआबरू होके तेरे दर से हम निकले, कभी हम तुझे कभी तेरे दर को देखते हैं। 80 साल की उम्र में ये दुर्गति, बैठ जाइए घर पे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। बीजेपी कह रही है कि वहां पर कांग्रेस प्रेसिडेंट का अपमान हुआ है, उनको एंट्री नहीं करने दी, गेट के बाहर उनको खड़ा करके रखा, दलित अपमान वो बीजेपी कह रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इन चीजों पर मैं क्या बोलूं? अब झूठ पर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। भाजपाई ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है। Amid all this, the Maharashtra state election assumes enormous significance. It is, after all, a microcosm of what's happening nationally. Alliance dynamics will play a greater role here, given the fact that both the Shiv Sena and the NCP have split since the time the last assembly election was held here in 2019. In 2024, the Mahayuti or the NDA suffered a rude shock in Maharashtra. The India Bloc or the Mahavikas Aghadi managed to win 30 out of 48 seats in the state. In terms of assembly segment leads, the MVA had 153 as opposed to the NDA's 126. देखिए, अभी जो फॉर्मूला सामने आ रहे हैं, एक फॉर्मूला मीडिया की तरफ से ही समझ में आ रहा है, लेकिन फाइनल मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे बैठे हैं, वो जब मेरे ख्याल से संयुक्त पत्रकार परिषद करेंगे तो वो पत्रकार वार्ता में आपको प्रॉपर फॉर्मूला, ये जो इनिशियल 85 का जो आंकड़ा है, इसके बाद और कुछ सीटें हैं, इनमें डिस्कशन अभी शुरू है, तो ये फाइनल डिस्कशन वही नेतागण सामने रखेंगे। But a lot of water has now flown under the bridge, so to speak, between June and October. There are already differences over seat sharing that have come to the fore. Will each of the key constituents of the Mahavikas Aghadi contest 85 seats each? The Congress has been demanding a larger share of the pie because of what it believes is its winnability factor. The Samajwadi Party is keen to contest, particularly in those seats that have a strong Muslim presence. In the case of the NDA, there appears to be far less confusion, with the BJP expected to corner a lion's share of the seats in terms of distribution. This will be a heated campaign because law and order has emerged as a serious issue following the brutal murder of former MLA Baba Siddique, formerly with the Congress, who had joined the Ajit Pawar NCP. His son Vishan will be fielded by Ajit Pawar NCP in the upcoming polls. And let me begin by asking you about the political start that you have taken today, the political plunge that you have taken today. Take us through what this really means to you and what really has driven this move. See, it's a very emotional day for me and the family today because I've got the nomination, the AB form from NCP. I'd like to thank Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji and the entire NCP family for believing in me in these tough times because our previous allies, their hypocrisy levels was just at its peak and they just started to politicize this entire issue. And in these tough times also politics was played and that's very unfortunate to say the least. And I'm very grateful to Ajit Dada for giving me this opportunity to listen to the people of Andhra East that they want me as an MLA yet again.
and I'm ready to fight the elections. My father, Baba Siddiqui ji, always had a dream for us to win these elections again, and now I have to continue the fight and take the battleground. Right. And your father, as you mentioned, Baba Siddiqui, had also joined the NCP before his tragic death. As you consider your political future, what role will his legacy play in your decision-making process? See, to be honest, because of the urgency of the elections, am I even thinking of all this? Losing a father is something I never even in my wildest dreams that I ever imagined that today I'll be going into elections and I wouldn't be having my father with me, because my father is someone who I shared a very close bond with, and today ideally, if I would come home with the AB form, he would hug me in public, kiss me in public, and that's how our bond was. But now, as you rightly said, that he's not with me, so I'm not really thinking too far. I know that he lost his life fighting for the people, fighting for the poor people and the marginalized of the society, and I'll continue doing so. And right now I'm just looking at winning the Bandra East elections with a record number, because the people are with me and the people know the sacrifices my family has made and the work we've done in the past 5 years. Well, undoubtedly losing a father is tough for anybody, and certainly to that extent, it is going to be a very difficult time for you and the family. May God give you the strength to handle that. But Zishan, do you also miss the fact that he was perhaps your political guru in the sense, somebody who could have guided you in the political field with his own experiences, and he could have shared that with you? Is that something that is that a void that you feel? See, that's a void that's not going to be filled now, not tomorrow, not day after, not in the next 5 years or the next 50 years. I never imagined living my life without my father. He's someone who's taught me how to walk, taught me how to speak, and taught me how to fight, the forces that are driving and trying to snatch away rights from the poor people. So his blood is running through my veins. I look up to him for any signs, and I look up to him to guide me. And he's not with me in person. He's never going to be with me in person. But I don't know. I don't know how life is going to be. Obviously, my house is never going to be the same. My mother, my sister, things are never going to be the same. And with the way these things unfolded, if it was a natural way, probably we could at least come in terms to it. But the way his life is taken away, to say, his life cannot go. It cannot go in vain. So he's brought me up in a way to never leave the battleground till the war is done. And I feel like I have to continue the fight and win the fight for my father and for the people of Bandra East. In poll-bound Jharkhand, the ruling Jharkhand Mukti Morcha, led by Hemant Soren, the Chief Minister, has also faced infighting with the exit of senior leader Champai Soren. The Congress is a junior partner in this alliance, but the government there has been facing anti-incumbency. So the upcoming polls in Maharashtra and Jharkhand are a litmus test for the India Bloc in more ways than one. It's a test of their unity and could be a determinant of whether or not the alliance survives the test.